वर्धा में भाजपा की कोर कमेटी की बैठक उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हुई, लेकिन यहां कुछ देर के लिए बिजली गुल होने से बैठक देरी से शुरू हुई। वैसे बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने महायुति में उम्मीदवारों के जल्द नाम की घोषणा होने की बात कही। चुनाव की घोषणा के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में सभी लोकसभा क्षेत्रों में बैठकें शुरू हो गई। इसी क्रम में वर्धा में भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। हालांकि बैठक के समय ही बिजली गुल हो गई, जिससे बैठक कुछ देर से शुरू हुई। वैसे इस बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बूथ निहाय जीत सुनिश्चित करने का मंत्र दिया। इसके लिए खास योजना भी बनाई गई है। निवडणुका घोषित झाल्यानंतर आमचे अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुळेजी यांच्या नेतृत्वात आम्ही सर्व लोकसभा क्षेत्रात नियोजनाच्या बैठका सुरू केल्या आहेत। आज सकाळी अकोल्याची बैठक पार पडली, आता वर्धा लोकसभेची बैठक पार पडली आहे। वर्धा लोकसभा मागच्या दोन्ही 14 आणि 19च्या निवडणुकीत आम्ही चांगल्या मताने जिंकलो। दोन्ही वेळी आम्हाला 53% आणि 54% मतं मिळाली आहेत। आणि आता जो संदेश आम्हाला मोदीजींनी दिला आहे की लोकसभेची निवडणूक नाही, बूथची निवडणूक लढा, त्यानुसार बूथपर्यंतचं नियोजन आम्ही केलेलं आहे। प्रत्येक बूथ जिंकायचा, ज्या बूथमध्ये कमी मतं होते त्या बूथमधली मतं कशी वाढवायची आणि बूथमध्ये 51% मतं मिळाले पाहिजेत, अशा प्रकारचं नियोजन आम्ही केलेलं आहे। वर्धा लोकसभा मतदारसंघातील 6 विधानसभा मतदारसंघामध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारची तयारी आमच्या संपूर्ण टीमने केली आहे आणि मला विश्वास आहे की मागील वेळेसपेक्षा देखील चांगल्या मताने आम्ही या ठिकाणी निवडून येऊ।